everyone, welcome to 2 Men 2 Bikes and we are off to Gujarat! So, you know this person, this is Biswajit. That is Kunal, the worst driver in our group. And this is Digvijay. And we have our bikes. This is the R15, Pulsar 150. That's my RR 310 and that's the Duke 390. So यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे. ये हमारा मीटअप पॉइंट था. Then we will begin our journey. And I think that's the Himalayan. बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है. कुछ ज़्यादा ही ठंड है. ये सिगरेट का धुआं नहीं है. सिगरेट का नहीं है, सर्दी का धुआं है. नाक से पानी बह रहा है भाई. बहुत कपकपी हो रही है. बहुत ज़्यादा. टेम्परेचर 14 दिखा रहा है लेकिन आग की ज़रूरत पड़ रही है. तो स्वेटर पे स्वेटर पहने जा रहे हैं. 2 3 4. और कैसा लग रहा है इसे ठंडी में राइड करते हुए? ठंडी तो है लेकिन राइड का मजा अलग है. तुम लोग साथ मजा आता है भाई राइड करने में. कुछ भी बोलो, ये सब मजा तो है. ये सब कैमरे के आगे बोलने की चीजें हैं. रियलिटी में फटके हाथ में. भाई एक तो फैमिली ब्लॉग बना रहे हो तुम बहन. कौन? हमारा 18+ कंटेंट 18+ for kids. YouTube का नया पॉलिसी. Okay. Enough of kidding. Actually, we are at the Maharashtra-Gujarat border. So that is the check post actually. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम का हाल बहुत बुरा है. सूरज निकल चुका है फिर भी बहुत ठंडी लग रही है. मुंह से धुआं भी निकल रहा है. मुंह पे चादर ओढ़ के हमारे सारे दोस्त. This is a fog here. It's like insane. मैं क्या बोल रहा था? मत बोलना. मैं बाइक पे खड़ा रहता ऐसे यूनिटी करके. देख लो. यूनिटी. चले जाएंगे वापस. हो गया यूनिटी. अभी भी ठंड लग रही है पर सूरज निकल चुका है. होपफुली टेम्परेचर गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में. We'll get too much of fog in the way. आग भी बुझ चुकी है तो हमें भी इधर से निकलना ही पड़ेगा. Because of the fog, the visibility will be low. Yes. And speed will be reduced. Quite a At lot least to half. actually. Quite a lot. Around 50-60. Riding around 100. So we have done about 150 kilometers so far and the average speed is not that great because it was too cold to ride fast. And we have stopped here at McD to have breakfast and as you can see the sun is shining bright and the temperature is increasing, so now we will be able to maintain higher speeds. So the next stop we will take is a fuel break and let's go inside and have breakfast. Okay, so right now we are at Ankleshwar and Biswajit, Digvijay and Kunal are at my back. They are following me because I am the one who is actually using the navigation. So seems like this is the bypass to the Ankleshwar
Anyways, the roads are really good. So far we haven't encountered any bad roads, and I hope the roads to stay the way it is. Everything is going absolutely fine. All the bikes are performing absolutely brilliantly. We are maintaining a speed of 100 to 110 kilometers per hour without any stress, without any issue. And I hope it stays like this. नासा कट गया था मेरे बीच में. क्या? नासा कट गया था नासा. अरे अरे अरे. मैं ऐसे ये वो है ना मेरे पास लेग गार्ड. ऐसे करके रखा था. 400 किलोमीटर है भाई. और 53 ओनली. होटल. हाँ. अभी तक आए नहीं. 10 किलोमीटर रहेगा अभी. नहीं तो वो राइट लिया. That's what happens when you tour on R15, isn't it? या फिर कोई मेन हाईवे तो नहीं है. नहीं दिखा. मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ. देखना. And did I tell you that we are actually using our tank bags, the Rhinox Magnapod tank bag as our tail bag, and it is surprisingly good, to be honest, as a tail bag, because I have a very good back support right here. So it is like whenever I want I can just relax as if I'm sitting in a chair. So that's one thing. Besides, also it is very much comfortable. I will just show you actually. As you can see, that's the tank bag. And Biswajit, can you please just sit and show how the tank bag acts as a backrest? What? Can you just please sit on your bike and show the audience that how the tank bag works as a backrest? Yep, there you go. Yep. Yes. So that's how it works as a backrest. We actually wish we could have bought the Optimus because it has more storage. And that's it. So finally I think we are ready to roll again. बहुत ज़्यादा डस्ट है. चलो. Yep. Isn't it kinda disappointing कि वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू को जाने के लिए रोड ये है एंड ऐसा है? आई मीन हाँ, मुंबई से आ रहे हो तो तुम टिल अंकलेश्वर तक तो अच्छा रोड पा ही जाओगे, बट उसके बाद ये क्या पैच है यार, ये कुछ ज़्यादा ही गंदा पैच है. और आगे मैं देख रहा हूँ बहुत एक ट्रैफिक है. ये थोड़ी ऐसे तुम ओह शिट ओके ऐसे थोड़ी होता है यार. ये दैट इज़ द world's tallest statue and the road, oh I mean I'm so sorry, but that's a huge traffic. I mean that's seriously, are you kidding me? I mean seriously. Oh, hi, you are the owner, right? Yeah, I'm Anshuman, Digvijay's friend. He's coming. Okay. Okay. Room is over there. Room is over there? Yeah. So we'll just go over there, and then we can come and bring and park your bikes over there, or you want to go walking? We're having heavy luggage, no? It's not that heavy. We can just park here and we can take our luggage with it. So how far it is? Just the right turn from here. Right turn from here? Square feet property. So it touches two ends. There is a shortcut from here. Okay. That doesn't do. So you can just go from there. Okay. So they are coming. We will decide then. Okay. The scene is we will be parking our bikes here. So basically it is a private parking and we can keep our bikes safely as per the owner's recommendation. And the main villa is like just a 2 minutes walk from here. So after parking our bikes, after removing our luggage, we will be heading to the villa.
ओके सो हम लोग अभी निकलने वाले हैं। एक्चुअली कल हमने होम स्टे का एक्चुअली इतना वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि ना वी वांटेड टू, आइए कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, आप ही तो मेन आदमी हैं, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना हम एक्चुअली चाहते थे कि एक बार एक्सपीरियंस कर ले होम स्टे कैसा है क्या है। ये पहली बार एक्चुअली हम लोग कोई होम स्टे में रुके थे एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छा था। ये जो हमारे आपको जानते हैं, मैं तो भूल गया, मिरल बट उन्होंने काफ़ी मदद की एकदम, मतलब अपने फैमिली जैसे उन्होंने हमको ट्रीट किया। काफ़ी अच्छा लगा, ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये यहाँ से कितना दूर है कम्युनिटी? 22 किलोमीटर से हाफ एन आवर लगता है। काफ़ी अच्छा लोकेशन है, सिटी भी काफ़ी अच्छा है। मैं रूम का वीडियो अभी आपको दिखा दूँगा। रूम भी काफ़ी अच्छा था, बट द बेस्ट पार्ट वाज वो जैसे हमको ट्रीट किया एकदम पूरा एकदम फैमिली, खुद का फैमिली समझ के, इनके भी फैमिली फील्स लाइक होम, यस एकदम घर वाला फीलिंग था। काफ़ी अच्छा था। रूम का वीडियो भी दिखा दूंगा, इनका नंबर मैं दे दूंगा। यहाँ पे मतलब आ रहे हो तो यहाँ पे रुक के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कंफर्टेबल है, सब कुछ अरेंज होके है। इनका खुद का रेस्टोरेंट भी खुल जाएगा, तो खाने पीने का भी कोई दिक्कत होगा नहीं। वैसे खाने पीने का कोई दिक्कत था नहीं, क्योंकि यहाँ पे पास में एक रेस्टोरेंट है, वेज थाली 80 रुपये में मस्त। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का होगा, देख लो, काफ़ी अच्छा है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।